Pediatric medicine cohort. Uh, I suppose you all are pediatricians here, so very nice to see young pediatricians here. Well, first of all, I would like to give you a good news that MedPrep Online has launched a course for FCPS Pediatric Medicine for the preparation of written exam. And soon we will be, inshallah, starting a course for clinical exam preparation. Our written course has started. So till now, we had 3 classes and we have discussed the topics neonatology, skin, eye, and ear. So we have covered most of the important topics. All of you are welcome to join this course. Everyone who will join this course will have an access to our PDF versions of the presentations I gave during the classes and also the recording of the classes. So those who will join late will have the recordings and lectures and they can ask me anything they want about previous classes. Well, today's lecture is going to be a glimpse for all of you that how we are conducting the classes for the preparation of written course. The topic for today's class is differential diagnosis of skin rash in pediatric population. But let me tell you that this is actually a very vast topic. We have done in our course, we have done the disorders of the skin. You know that rash can be of various kinds. Rash can be because of some of the congenital diseases of the skin, some of the acquired diseases of the skin, some of the skin diseases like scabies, tinea, etc. We can have skin rash associated with vasculitis and autoimmune disorders like SLE, JDM, that is juvenile dermatomyositis, Kawasaki disease, Phenolphthalein purpura. And there are fourth class would be the skin rashes, which are because of various kinds of infections. And the rashes, due to various kind of infections, the pediatricians, they usually encounter such kind of skin rashes. Now, today's webinar, just to keep it short, because this is just a glimpse of what we'll be doing in our course, how we'll be conducting the classes. So I have kept today's webinar and lecture short. We won't be discussing the disorders of the skin. We won't be discussing the rash of autoimmune disorders. Today, we'll be discussing the skin rash, which we see in various infectious diseases. So let me share my presentation with you. With the presentation is, it's always easy to study. But obviously, the presentations, they don't have all the material which we need to study. So, and sometimes, in the presentation, things are written in point form, and just by reading the slide, we cannot understand what's written. That's why in our webinars, in our classes, we discuss the important topics and we show you the presentation as well. Please type in the chat box that you can see my presentation. Skin rash and infections. So I've just narrowed down the topic. Now, please type in the chat box. What do you see in this picture? वैसे तो पिक्चर के नीचे कैप्शन में लिखा भी हुआ है कि किस चीज का रैश है. अच्छा, अब रिटन एग्जाम में बेसिकली इन्फेक्शंस के रैशेस के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. Obviously, in written exam, you're going to have MCQs. So what happens is that in our FCPS written exam, we don't get any pictures. वरना कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्स और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा कि इवन इन द रिटन एग्जाम्स in the MCQs, pictures are given and we are asked to choose the correct option, right? But in our FCPS written exam, we don't have pictures.
तो अगर आप एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो एक्चुअली क्या होगा कि आपको एक सिनेरियो गिवन होगा. फॉर एग्जांपल, इफ दे वांट यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, so they'll give you a clinical scenario, and in that clinical scenario they'll explain the kind of rash and the other associated signs and symptoms related to that particular infectious disease, and then they simply ask you that what is this infection, so you have to identify. Or second kind of MCQs could be that typical presentation of any infectious disease including the rash is given. They don't ask you the infectious disease name. They don't name the infectious disease. They just tell you that what would be the management. They just ask you what would be the management and treatment. So that's kind of MCQs. That's the kind of MCQ in which interpretation is required. You read the scenario, you read the kind of rash the patient has, then you make a diagnosis in your mind, and then for that diagnosis, you have to choose the right option for the treatment of that particular disease. So in MCQs, you can have such kind of questions related to rashes and infections. And pictures, these are very important in talks. In talks, in any station, you can have a picture of the typical rash, and they'll simply ask you that, what is this rash? For your help, they'll explain some other signs and symptoms of the disease as well. So you will have to identify. Some marks would be for just the identification. Then the second question could be that uh, how will you confirm your diagnosis? So you will have to tell the investigations necessary for that infection. And third would be that how would you manage the disease in journal and how would you manage the rash of the disease? So in infectious diseases, the rash, we don't have to actually manage the rash itself. We just have to give the appropriate antibiotic, or in case of viral illness, we just have to do the supportive treatment, and we don't have to give any topical medicine for the rash. So basically, treatment for infection in journal would be the treatment for the rash of this disease. So this picture, nobody has answered in the chat box that what is this rash. Anyways, this is the rash of measles. Now, what is the rash of measles? We know that there are certain symptoms of measles. We won't be studying the symptoms in detail, but the symptoms increase in intensity for 2 to 4 days until the first day of rash. So we are talking about the prodromal symptoms actually. Prodromal symptoms develop and then they increase in intensity. But when the rash appears, the symptoms settle down, right? Rash begins on the forehead, around the hairline, behind the ears, and on the upper neck as a red maculopapular rash. So for every kind of rash, you should know that it involves what area and from where does it start, how does it progress, what is the pattern of development, right? What are the various stages of the rash? And when the rash is completely resolved, what are the after effects on the skin? And you also should be knowing how each rash looks. So once it appears behind the ears or around the forehead, it then spreads downwards to the torso and extremities, reaching the palms and soles in up to 50% of cases. But in 50% of the cases, palms and soles are not involved. This rash can be called as exanthem. The exanthem frequently becomes confluent on the face and upper trunk. So ये मिलके red सा area बन जाता है. With the onset of rash, symptoms begin to subside. The rash fades over about 7 days in the same progression as it evolved, often leaving a fine desquamation of skin in its wake. Of the major symptoms of measles, the cough lasts the longest, often up to 10 days. And in more severe cases, generalized lymphadenopathy are seen. तो आपने क्लिनिकली मीजल्स का रैश देखा होगा कि जब वो रिजॉल्व होता है तो डिस्क्वेमेशन हो जाती है. रैश सेटल हो जाता है डिस्क्वेमेट होने के बाद. Cough can persist. Now, what is this? This is a rash similar to measles. This is basically a rash of rubella. And you know that rubella is a disease which is very much similar to measles. And it's also called as German measles.
In children, the first manifestation of rubella is usually the rash, which is variable and not distinctive, often more prominent with heat. So these are the particular characteristics of this rash. It begins on the face and neck as small irregular pink papules that coalesce, and it spreads centrifugally to involve the torso and extremities, where it tends to occur as discrete macules. ठीक है, यानी पहले फेस एंड नेक पे आता है, लेकिन वहां पेप्यूल्स मिल के लार्जर एरियाज बना देते हैं, और फिर जब ये रैश टॉर्सो एंड एक्सट्रीमिटीज पे आता है तो वहां पे ये यूजुअली डिस्क्रीट मैक्यूल्स की सूरत में होता है. सो मीजल्स का रैश वाज मैक्यूलोपेपुलर एंड रुबेला का रैश इज मैक्यूलर. मैक्यूलर क्या है? सिंपली डिस्कलरेशन है, ठीक है, और पेप्यूल्स जो है वो थोड़े से पैल्पेबल होते हैं. Now, what is this? You can see there are lesions on palms and soles, and there is a lesion on the mucosa of the tongue. This is basically hand, foot, and mouth disease. This is one of the more distinctive rash syndromes. It's a syndrome actually. It's more frequently caused by Coxsackie virus A16. So, commonest cause of hand, foot, and mouth disease is Coxsackie A6 virus. लेकिन इसके अलावा some other viruses जिनके names लिखे हुए हैं, these can also cause the syndrome. So hand, foot, and mouth disease को हम generally discuss कर रहे हैं. It's usually a mild illness with or without low-grade fever. When the mouth is involved, the oropharynx is inflamed and often contains scattered, painful vesicles on the tongue, buccal mucosa, posterior pharynx, palate, gingiva, and or lips. So skin की lesions हो या oral mucosa की, आपको पता है that any the mucosae and skin, they have somewhat the similar composition. So अक्सर जो rash होते हैं जो skin पे आते हैं, उसी तरह की similar lesions mucosae पे भी आती है. So these lesions may ulcerate, leaving 4 to 8 mm shallow lesions with surrounding erythema, maculopapular, vesicular, and or pustular lesions may occur on the hands and feet. So hands and feet पे basically हर तरह की lesion आ सकती है. हम जब स्किन पढ़ा करते थे ना फाइनल ईयर, तो हम पढ़ते होते थे कि टाइप्स ऑफ लीजन्स जनरली क्या होती है, मैक्यूल्स एंड पैप्यूल्स, वेसिकल्स, और अगर वेसिकल्स पस फिल्ड हो जाए तो पस्ट्यूल्स. और इस तरह की लीजन्स हैंड्स एंड फिंगर्स के अलावा फीट, बटक्स एंड ग्रोइन पे भी बन सकते हैं. स्किन लीजन्स अकर मोर कॉमनली ऑन द हैंड्स देन फीट and are more common on dorsal surface but frequently also affects palms and soles. So lesions आपकी dorsal surfaces पे ज्यादा common है, palms and soles पे कम common है. Hand and foot lesions are usually tender, 3 to 7 mm vesicles that resolve in about 1 week. Buttock lesions do not usually progress to vesiculation. Disseminated vesicular rashes, described as eczema coxsaccicum, may complicate pre-existing eczema. So eczema के साथ अगर super added vesicles बन जाए तो वो थोड़ी सी dangerous condition होती है, काफी extensive होती है. Coxsackie virus in particular is responsible for the relatively severe atypical hand, foot, and mouth disease, and it also causes herpangina. Herpangina को हम अभी discuss नहीं करें, infectious diseases में करेंगे. Affecting adults and children, that is characterized by fever, generalized rash involving the face, proximal extremities, and trunk, in addition to hands, feet, and buttocks. Pain, dehydration, and desquamation of palms and soles. Onychomedicis, that is nail shedding, has been observed. So onychomedicis हमारे लिए complicated term है. You can just remember that there is nail shedding also in this disease. Hand and foot mouth disease caused by enterovirus can be associated with neurological and cardiopulmonary involvement, especially in young children. अच्छा, neurological manifestations वैसे हम enterovirus की infectious diseases में discuss करेंगे. Hand, foot, and mouth disease caused by Coxsackie virus can occasionally be associated with complications such as encephalitis, AFP, myocarditis, pericarditis, and shock. So skin rash के साथ obviously infection की बाकी चीजें भी होगी. Now, what is this? This is the typical slap cheek appearance
and this is basically called as erythema infectiosum. This is also erythema infectiosum. Now, what is erythema infectiosum? This is also called as fifth disease, and it is the most common manifestation of parvovirus B19. इसको हम fifth disease भी कहते हैं. It's a benign self-limited exanthematous illness of childhood. Incubation period it is of 14 to 28, 4 to 28 days. The prodromal phase is mild and consists of low-grade fever, headache, and symptoms of upper respiratory tract infection. The hallmark of erythema infectiosum is the characteristic rash, which occurs in 3 stages that are not always distinguishable. तो इतना distinguishable नहीं होता कि हम इसकी तीनों stages को identify करें. Initial stage में सिर्फ erythematous facial flushing आती है, जिसको हम slab cheek appearance कहते हैं. The rash spreads rapidly and concurrently to the trunk and proximal extremities as a diffuse macular erythema in the second stage. And after the second stage, there is central clearing of macular lesions occurring, which occurs promptly, giving the rash a lacy, reticulated appearance. So, जब central clearing होना शुरू हो जाती है, तो typical lacy, reticulated appearance आती है rash की. The rash tends to be more prominent on extensive surfaces, sparing the palms and soles. Affected children are afebrile and do not appear ill. तो ये बच्चे sick नहीं होते. Some can have petechiae, and some can have mild pruritus. The rash resolves spontaneously without desquamation but tends to wax and wane over 1 to 3 weeks. It can reoccur with exposure to sunlight, heat, exercise, and stress. Lymphadenopathy and atypical papillar, pruritic, and vesicular rashes are also described. लेकिन हमने basically इसके typical rash को ही याद रखना है. अच्छा जी, अब ये क्या है? Papillar purpuric glove and sock syndrome. ठीक है, ये भी gloves and stalk syndrome है. और what is gloves and stalk syndrome? अभी हमने erythema के बारे में पढ़ा, erythema infectiosum के बारे में, that it is caused by parvovirus B19. So this gloves and stalk syndrome is also caused by the same virus. A variety of atypical skin eruptions have been reported in this viral infection. Most of these are petechial or purpuric, often with the evidence of vasculitis on biopsy. Actually, जब भी petechiae या purpura आएंगे तो vasculitis का element होगा, ठीक है? Above these rashes, among these rashes, the papillar purpuric gloves and sock syndrome is well established, and it is characterized by fever, pruritus, and painful edema and erythema localized to the distal extremities in a distinct gloves and socks distribution, followed by acral petechiae and oral lesions. This syndrome is self-limited and resolves within a few weeks, and it was initially described in young adults, लेकिन बच्चों में भी इसके cases report हुए हैं, so it's kind of rare. In those cases linked to this infection, the eruption is accompanied by serological evidence of acute infection, and generalized petechial rash has also been seen. तो याद रखिएगा कि ये दो तरह की manifestations आती हैं parvovirus B19 में. Now, what is this? You can see the vesicles around the oral cavity. These are the vesicles of herpes simplex virus. These are again the lesions of herpes simplex virus. This is also herpes simplex virus, which has occurred in an eczematous child. The hallmark of common herpes simplex virus are skin vesicles and shallow ulcers. Classical infections manifest as small 2 to 4 mm vesicles that may be surrounded by an erythematous base. They may persist for a few days after evolving into shallow, minimally erythematous ulcers. So, पहले vesicles होते हैं, and then they convert into shallow ulcers. The vesicular phase tends to persist longer when keratinized epithelia is involved, and is generally brief and sometimes just fleeting when moist mucous surface, mucous membranes are sites of infection. So vesicles आपके ज़्यादा persist करता है skin के ऊपर और mucous membrane के जल्दी heal हो जाते हैं. अच्छा जी, in the healthy child or adolescent, cutaneous herpes simplex infections are generally the result of skin trauma with micro and macro abrasions and exposure to infectious secretions. फिर हम इसको आगे complicated चीजों को मिस कर देते हैं, ठीक है? और एक पॉइंट देख लेते हैं कि जी पेन, बर्निंग, इचिंग और tingling often precedes the herpetic eruption by a few hours to few days. ये this is important.
Like herpes labialis, lesions began as herpes labialis is another term. ठीक है, अभी हम skin eruptions की बात करें. So the erythematous papules that progress to vesicles, pustules, ulcers and crust and then heal without scarring in 6 to 10 days. तो herpes की lesions का scar नहीं बनता. ठीक है. Although herpes labialis typically results in a single lesion, a cutaneous herpes simplex infections result in multiple discrete lesions. So skin वाली lesions multiple and discrete होती हैं और ये heal होती हैं without any scar. बाकी herpes की different kind of infections को हम discuss करेंगे in topic of infectious disease. This is also the vesicular pustular lesions on the face of a neonate with herpes simplex virus. Infants, यानी कि जो newborns या infants है, with skin, eye, and mouth disease generally present at 5 to 11 days of life and typically demonstrate a few clustered small vesicles, particularly on the presenting part or at sites of trauma. Presenting part क्या है कि जो पार्ट भी vaginal canal से जब ये निकल रहे होते हैं तो face is the presenting part ना normally, तो उसके ऊपर ये आते हैं. Particularly on the presenting part or at sites of trauma such as sites of scalp electrode placement. If untreated, skin, eye, and mouth disease in infants may progress to encephalitis or disseminated disease. So herpes simplex in newborns is a serious condition. Now, what is this? These are the lesions of chickenpox. Now, what is chickenpox or varicella? अच्छा, वेरिसीला के बारे में हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जी जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें थोड़ी डिफरेंट लीजन्स आती हैं. दोज चिल्ड्रन हु आर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड और हु आर अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, उनमें लीजन्स डिफरेंट तरह की आती है. तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरिसीला इन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, these lesions often appear first on the scalp, face, or trunk. The initial exanthem consists of intensely pruritic erythematous macules. So pruritus is the hallmark. So these papules that evolve through the papillary stage to form clear fluid-filled vesicles. Clouding and umbilication of the lesions begin in 24 to 48 hours. So basically in vesicles का जो fluid होता है that can get infected और वो पसी सा हो जाता है और इन vesicles के बीच में एक ऐसे आपको depression सा मिलता है. That's the umbilication basically. While the initial lesions are crusting, new crops form on the trunk and then the extremities. The simultaneous presence of lesions in various stages of evolution is characteristic of varicella. ठीक है, ये याद रखिएगा कि हमें एक टाइम पे डिफरेंट तरह की लीजन्स मिलती हैं because new crops arise. The distribution of the rash is predominantly central or centripetal, with the greatest concentration on the trunk and proximally on the extremity. So सबसे ज्यादा trunk और upper limbs पे आती हैं. Ulcerative lesions involving the mucosa of the oropharynx and vagina are also common. Many children have vesicular lesions on the eyelids and conjunctiva, but corneal involvement and serious ocular disease are rare. So chickenpox की lesions कई दफा eyelids पे तो आएंगी, skin है, conjunctiva पे भी आ जाती है. ठीक है. The average number of varicella lesions is about 300, but children may have fewer than 10 or more than 1500. Exanthem may be much more extensive in children with skin disorders such as eczema. Hyperpigmentation or hyperpigmentation of the lesion sites persist for days to weeks in some children, but severe scarring is unusual unless the lesions were secondarily infected. But even I have a lesion on my face which has left a scar. So जब आपकी चिकन पॉक्स की लीजन्स इन्फेक्ट हो जाती हैं तो वो फिर स्कार छोड़ जाती हैं. इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं कि प्रोराइटिस हो तो डोंट पिक ऑन योर, डोंट स्क्रैच ऑन योर चिकन पॉक्स वेसिकल्स, बिकॉज फिर वो स्क्रैचिंग की वजह से दे टेंड टू हैव सेकेंडरी इन्फेक्शन and then they leave a very ugly scar. So in vaccinated individuals में basically आपकी चिकन पॉक्स की lesions, अभी हमने बात की थी कि in healthy children the lesions could be less than 10 even. So vaccinated individuals में एक तो lesions जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आती, जल्दी resolve हो जाती हैं and complications of chicken pox are not seen. अब ये जो slide है, this is basically about the rash which occurs because of the vaccine ऑफ चिकन पॉक्स. ठीक है, क्योंकि ये लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन होती है तो वाइल्ड टाइप वेरिसिला जोस्टर और वैक्सीन स्ट्रेन की वजह से you can have the rash similar to chicken pox. During days 0 to 48 after vaccination,
sorry, during days 0 to 42 after vaccination, the likelihood of rash from wild type or vaccine strain depending on the stage of a country's vaccination program. In the early stages of a vaccination program, rash within 1 to 2 weeks is still commonly caused by wild type. ठीक है, तो अगर ये यूजुअली डेवलप कंट्रीज में तो नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में ही इस तरह की चीजें देखी जाती हैं. अगर तो रैश विद इन 1 to 2 weeks ऑफ वैक्सीनेशन में अपीयर हो गए तो वो यूजुअली वाइल्ड टाइप वेरिसिला जोस्टर की वजह से होता है. रिफ्लेक्टिंग एक्सपोजर टू वेरिसिला बिफोर वैक्सीनेशन वुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन. तो अगर वैक्सीन लगने से पहले कभी बच्चे को चिकन पॉक्स हो चुका है तो उसमें जरा ये लीजन्स कम खतरनाक होंगे. Rash occurring 14 to 42 days after vaccination is a result of either wild type or vaccine strain, reflecting exposure and infection before protection from vaccination or an adverse event of vaccination. As wild type varicella continues to decline as a consequence of the vaccination program, wild type varicella zoster circulation will also decline, and rashes in the interval 0 to 42 days after vaccination will be less commonly caused by wild type. ठीक है, so अब basically इसका जो incidence है especially developed countries में ये कम हो चुका है. Now what is this? These are the vesicular lesions which you can see have a particular dermatomal distribution. So this is zoster, herpes zoster. You know, herpes zoster is again caused by chickenpox virus. ठीक है, herpes chickenpox virus basically. It can cause chickenpox or the zoster. So herpes zoster that manifests as vesicular lesions clustered within one or less commonly two adjacent dermatomes. Unlike herpes zoster in adults, अब herpes zoster in adults के कुछ different features होते हैं, लेकिन बच्चों में usually ये localized pain, hyperesthesia, pruritus, low grade fever और complications के साथ ज्यादा associated नहीं होता है. Adults में herpes के साथ localized pain बहुत ज्यादा होती है. In children, the rash is mild with new lesions appearing for a few days. Symptoms of acute neuritis are minimal and complete resolution usually occurs within 1 to 2 weeks. Unlike in adults, post-herpetic neuralgia is unusual. ठीक है, so पहले भी जो आता है localized pain आती है बड़ों में, और post-herpetic neuralgia जो आता है adults में, वो दोनों चीजें ही बच्चों में कम होती हैं. An increased risk for herpes zoster early in childhood has been described in children who acquire infection with varicella zoster virus in utero or in the first year of life. तो अगर childhood में, adulthood में ही आता है, लेकिन zoster childhood में तब आ सकता है कि जब बच्चे को का exposure हो गया था with this virus when he was inside the mother, यानी कि mother को chickenpox infection हुई थी, या फिर विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ अगर बच्चे को चिकन पॉक्स हुए हैं तो फिर चाइल्डहुड में herpes zoster होने का चांस है, बिकॉज यू नो दैट दिस वायरस स्टेज इन द बॉडी और फिर ये एक स्टेज पे herpes zoster कर देते हैं. ठीक है, व्हाट इज दिस? ये अब आपको साथ में थ्रोट की पिक्चर भी दिखाई है. आपको टॉक्स में ना इस तरह से पिक्चर्स आ सकते हैं कि टू और थ्री इंटर रिलेटेड पिक्चर्स कुड बी प्रेजेंट, और आपने फिर उससे एक डिजीज को आइडेंटिफाई करना होता है. तो नाउ यू कैन सी कि टॉन्सिल्स के ऊपर मेम्ब्रेन है और एक स्किन के ऊपर रैश है. सो दिस इज बेसिकली एमॉक्सिसिलिन इंड्यूस्ड रैश एंड एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है, अब एप्स्टीन बार वायरस जो है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करता है. ठीक है, अब उसकी थ्रोट की क्या टिपिकल फाइंडिंग्स होती हैं वो इंशाल्लाह हम इन्फेक्शियस डिजीज के टॉपिक में करेंगे, लेकिन एमॉक्सिसिलिन रैश या एम्पिसिलिन रैश क्या होता है? Patients with infectious mononucleosis who are treated with ampicillin or amoxicillin may experience a rash, which is called as ampicillin or amoxicillin rash, which may also occur with the other beta-lactam antibiotics. This morbilliform vasculitic rash is probably immune-mediated and resolves without specific treatment. So, ये infection का rash नहीं है. This is an immune-mediated rash. ठीक है? Epstein-Barr virus can be associated with other skin manifestations and various kinds of rash. जैसे कि इसमें एक rash होता है और उस रैश के पेरेंट्स को हम ये डिफरेंट सी टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट सी वो कहते हैं. सो बेसिकली दिस थिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस से रिलेटेड है वो एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन रैश एक इम्पोर्टेंट चीज है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज रोजियोला इन्फेंटम. ठीक है,
पहले हमने एक एरिथीमा इन्फेक्शियोजम की बात की थी, दिस इज रोजियोला इन्फेंटम। ठीक है, थोड़ी सी ये दोनों मिलती जुलती सी टर्म्स हैं। रोजियोला इन्फेंटम को हम सिक्स्थ डिजीज कहते हैं, और इससे पहले हमने कहा था कि हम एरिथीमा इन्फेक्शियोजम को फिफ्थ डिजीज कहते हैं। रोजियोला इन्फेंटम, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन herpes वायरस 6 and 7, or 6 or 8 perhaps. It is an acute self-limited disease of infancy and early childhood. It is characterized by the abrupt onset of high fever, which may be accompanied by fussiness. The fever usually resolves acutely after 72 hours, but may gradually fade over a day, coincident with the appearance of a faint. So, जब fever settle होता है, तो आपका रैश अपीयर होता है. This is characteristic. ठीक है, वैसे तो हमने कहा था कि जो हमारा मीजल्स का रैश है वो जब अपीयर होता है तो सिम्टम हो जाता है, लेकिन जब मीजल्स जब मीजल्स का रैश अपीयर होता है, जब जब न्यू मीजल्स बनते हैं, उसी वक्त फीवर जो है वो डेवलप होता है, उसी वक्त बच्चा फेब्राइल भी होता है. तो रोजियोला इन्फेंटम में जब लीजन्स बनती है, फेंट पिंक और रोज कलर्ड, नॉन प्यूरेटिक or biliform rash on the trunk to the fever that settles. The rash usually lasts 1 to 3 days, which is often described as evanescent and may be visible only for hours, spreading from the trunk to the face and extremities. Because the rash is variable in appearance, location, and duration, it is not distinctive and may be missed. तो ये rash इतना मार्क नहीं होता कि हम इसको पिक कर लें. ठीक है, एसोसिएटेड साइंस और सिम्टम्स को हम नहीं पढ़ते, वो हम इंशाल्लाह इन्फेक्शियस डिजीजेस में पढ़ेंगे. अब ये आपकी वेरियस प्रेजेंटेशंस हैं of the skin in case of COVID-19. अच्छा, कोविड का जो टॉपिक है, दैट इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि अब हमारी लेटेस्ट एडिशन में बहुत अच्छा गिवन है, शायद 21st एडिशन में नहीं है उस तरह से गिवन. ये टेबल एंड एनालिसिस से मैंने लिया, इसको आप देख सकते हैं कि कोविड में वेरियस काइंड ऑफ स्किन लीजन्स कुड बी सीन. इसमें आप देखिए एडीमा भी हुआ हुआ है, प्लूरेटिक रैश भी है. सो वेरियस काइंड ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशंस वी कुड सी. ठीक है, व्हाट इज दिस? ये आपकी क्लासिकली एरिथीमा मार्जिनेटम के रैश है, which is seen in acute rheumatic fever, and it is one of the major criteria for ARF. Erythema marginatum is a rare but characteristic rash of acute rheumatic fever. It consists of erythematous serpiginous macular lesions with pale centers that are not pruritic. It occurs primarily on the trunk and extremities, but not on the face, and it can be accentuated by warming the skin. So skin को warm करने से appear हो जाते हैं. ये देखिएगा, ये भी प्लूरेटिक रैशेस है. ठीक है, तो ये HSP का रैश नहीं है, बिकॉज ट्रंक के ऊपर भी आया हुआ HSP का आपको पता है रैशेस डिफरेंट. और इस तरह का रैश अगर प्लूरेटिक आएगा तो आपको कुछ सिनेरियो भी गिवन होगा. बेसिकली ये मेनिंगोकोक्सीमिया का रैश है. तो सिनेरियो में आपको शो कराया गया होगा कि बच्चा बहुत सिक है, फेब्राइल इलनेस है और फिट्स भी हो रहे हैं. मेनिंगोकोक्सीमिया और मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया, when it progresses cold hands or feet and abnormal skin color may be important signs. Capillary refill time becomes prolonged and non-blenching or petechial rash will develop in more than 80% of cases. Blenchable lesion क्या होती है कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो सडनली द रैश इज गॉन और स्किन व्हाइट सी हो जाती है, और जब आप प्रेशर को रिलीज करते हैं, फिंगर को हटाते हैं, तो वो रैश रीअपीयर हो जाता है. लेकिन ये ब्लैंचेबल लीजन नहीं होती है, या खत्म नहीं होती है जब आप इसको प्रेस करें. In fulminant meningococcal septicemia, the disease progresses rapidly over several hours from fever with non-specific signs to septic shock, characterized by prominent petechiae and purpura. So, ये जो basically इसमें purpura and petechiae आता है, इसको हम purpura fulminans कहते हैं. With poor peripheral perfusion, tachycardia, increased respiratory rate, hypotension, confusion and coma. अच्छा, ये क्या है? अब इसमें आप देख रहे हैं कि again 2 and 3 pictures are given. एक रैश है,
और साथ में स्ट्रॉबेरी टंग है. तो दिस इज बेसिकली द रैश ऑफ स्कारलेट फीवर. स्कारलेट फीवर जो है, the rash appears within 24 to 48 hours after the onset of symptoms, although okay, it often begins around the neck. Main points करते हैं because this is a crowded slide. हमारी proper class नहीं हो रही है, so we just need to give you a hint that how we study. और हम आपको मेजर पॉइंट्स बताएंगे आज. तो स्कारलेट फीवर का जो रैश है वो इन्फेक्शन के 24 to 48 आवर्स के बाद, लाइक ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के बाद आता है. नेक पे आता है, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज पे चला जाता है. डिफ्यूज रैश है, फाइनली पेपुलर, एरिथेमेटस इरप्शन, ब्राइट रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कर देता है. एंड दिस रैश ब्लेंचेस ऑन प्रेशर. It is often accentuated in the creases of the elbows, axilla, and groin. The skin has a goose pimple appearance and feels rough. Sandpaper like appearance जो कहते हैं ना हम रैश की, sandpaper like feel होती है इसकी. The cheeks are often erythematous with very oral pallor. After 3 to 4 days, the rash begins to fade and it's followed by desquamation, initially on the face, progressing caudally and often resembling a mild sunburn. Occasionally, a sheet-like desquamation may occur around the free margins of the fingernails, the palms, and the soles. Typical scarlet fever is not difficult to diagnose. The milder form with equivocal pharyngeal findings can be confused with viral exanthems. स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन भी इस तरह का एक रैश कॉज करता है, लेकिन स्कारलेट फीवर इज द टिपिकल टर्म ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है. तो आपको क्लू कैसे मिलेगा दैट यू मे हैव अ हिस्ट्री ऑफ रीसेंट एक्सपोजर टू जीएएस इन्फेक्शन, और जो आपकी जीएएस की टिपिकल फेरेंजियल फाइंडिंग होती है वो आपको साथ में मिलेंगी. तो इन दो चीजों से आप रैश को कंफर्म करेंगे दिस इज द रैश ऑफ स्कारलेट फीवर. और साथ में आपकी स्ट्रॉबेरी टंग होगी, ठीक है, तो और पिपिला व्हाइटिश हो जाएंगे, लाइक वो हम सारी उसकी जो फर्दर फाइन चीजें होती हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. दिस इज द टिपिकल इम्पेटाइगो. इम्पेटाइगो जिसको हम पायोडर्मा भी कहते हैं, इसकी दो फॉर्म्स है, बुलस एंड नॉन बुलस. जो बुलस फॉर्म है वो स्टेफ ऑरियस करता है, नॉन बुलस आपका स्ट्रेप्टोकोकस करता है. नॉन बुलस आपकी एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन होती है जिसमें पहले एक डिस्क्रीट पेपिलोवेसिकुलर लीजन बनती है which is surrounded by localized area of redness. The vesicles then rapidly become purulent and covered with a thick confluent amber colored crust or honey crust, जिसे हम कहते हैं honey colored crusting, that gives the appearance of having been stuck on the skin. ऐसे जैसे कोई चीज चिपकी हुई है, you know. These lesions may occur anywhere but are more common on the face and extremities. If untreated, non-bullous impetigo is a mild but chronic illness, often spreading to the other parts of the body. ठीक है ना, जैसे लोग ऐसे परसीव करते हैं कि जी अक्सर जब आपके पास इसके पेशेंट्स आते हैं तो मदर या फादर उनकी एक परसेप्शन होती है कि इन दानों में से कुछ निकल रहा है, जो स्किन पे कहीं भी लगता है तो दाने फैल जाते हैं. तो इट्स नॉट लाइक दैट. बस ये रैपिडली प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है और इसमें हनी क्रस्टिंग से ऐसी फील आती है कि जी लीजन से कुछ निकल रहा है और वो स्किन पे लगता है तो वहां नई लीजन बच जाती है. अच्छा, रीजनल लिम्फेडेनाइटिस साथ में हो सकती है. ओके, अच्छा, ये बुलस impetigo है. बुलस impetigo इज लेस कॉमन. इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन न्यूनेट्स एंड यंग इन्फेंट्स. छोटे बच्चों में ज्यादा होता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैसिड transparent bully, usually less than 3 centimeter on previously untraumatized skin. Their usual distribution involves the face, buttocks, trunk, and perineum. Although Staphylococcus aureus has traditionally been accepted as the sole pathogen responsible for the bullous impetigo. अच्छा, यानी अब तक यही है कि स्टेफ ऑरियस को ही रिकॉग्नाइज किया गया कि यही बुलस इम्पेटाइगो करेगा, लेकिन फिर भी the clinicians and researchers have a confusion कि इसके causative agents में कुछ और organisms भी आता है, लेकिन theoretical purpose के लिए we should be knowing कि bullous impetigo Staph aureus करता है. In most episodes of non-bullous impetigo, either GAS or Staph aureus is isolated. तो Staph aureus non-bullous impetigo भी कर सकता है. Sometimes इन दोनों की mixed growth आती है अगर आप isolation करें organism की.
Early investigation suggests that GS was a causative agent in most cases of non-bullous impetigo. So I think we can leave this point. Culture of the lesions is the only way to distinguish non-bullous impetigo caused by Staph aureus from that caused by GS. So lesions की culture and sensitivity से हमें पता चलता है. ये क्या है? ये आप देख रहे हैं कि लोअर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन पे कुछ लीजन हैं जिनको सर्कल भी किया गया है. These are not that marked actually. ये बेसिकली enteric fever के रो स्पॉट्स है. In some cases of enteric fever, a macular or maculopapular rash or row spots may be visible around the 7th to 10th day of illness. These lesions may be difficult to see in dark-skinned children and may occur in coughs on the lower chest and abdomen, typically lasting 2 to 3 days. So ये आपको पता होना चाहिए कि रो स्पॉट्स क्या होता है. अच्छा जी, अब हमारी बस 2 स्लाइड्स रह गई हैं. व्हाट इज दिस? बेसिकली डेंगू के रैश का बहुत ज्यादा हमारी टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन डेंगू में भी हम क्लासिकली एक क्लिनिकली एक रैश देखते हैं. सो बेसिकली डेंगू में 2 तरह के रैश आ सकते हैं. वन, वी कैन हैव अ फ्लैट रेड रैश that may appear over most of the body 2 to 5 days after the fever starts. तो एक फेब्राइल फेज में रैश मिल सकता है. लेकिन एक आपको सेकेंड रैश जो कि कॉमनली सीन है, it looks like the rash of measles, appears late in the disease. Infected people may have increased skin sensitivity and very uncomfortable. अगर मैं आपको प्रैक्टिकली और क्लिनिकली बताऊं, तो जब आपका फेब्राइल इलनेस खत्म हो रही होती है और बच्चा रिकवरी की तरफ जा रहा होता है, तो बच्चे को ये रैश अपीयर होना शुरू हो जाता है मीजल्स की तरह का, और ये बहुत अच्छी रैश होता है. तो बेसिकली ये एक रैश थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देता है दैट फेब्राइल इलनेस हैज एंडेड, और कि पिलरी लीग में भी नहीं गया बच्चा. बच्चा बेसिकली रिकवरी फेज में आ रहा है. मॉन्की पॉक्स हमारी बुक्स में गिवन नहीं है, लेकिन मॉन्की पॉक्स के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए. और इवन बिकॉज ये कॉमन डिजीज है, पाकिस्तान में देखी जा रही है, तो वी शुड बी नोइंग कि मॉन्की पॉक्स क्या है और इसकी लीजन्स कैसी होती है. मॉन्की पॉक्स की लीजन्स चिकन पॉक्स की लीजन से मिलती हैं, लेकिन ज्यादा अगली लुकिंग होती हैं. एंड टिपिकली इसके जो सोर्स होते हैं या इसकी लीजन्स होती हैं, दे वेरी पेनफुल. जबकि चिकन पॉक्स की जो लीजन्स होती हैं, दे जस्ट इची. चिकन पॉक्स के जो आपके सोर्स हैं या लीजन्स हैं, दे लास्ट अबाउट 2 वीक्स, लेकिन मॉन्की पॉक्स के 2 to 4 वीक्स परसिस्ट करता है. सम डेज बैक आई सॉ अ केस ऑफ हेमरेजिक चिकन पॉक्स. क्या होता है वो हेमरेजिक लीजन्स कैसी होती है चिकन पॉक्स के टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो उसकी हर लीजन में से ब्लड ooze आउट हो रहा था. तो बिकॉज द लीजन्स वर वेरी वाइड स्प्रेड और ऐसे अगली लुकिंग सी थी, हेमरेजिक भी थी, so we had a suspicion of monkeypox, but उसकी serology वगैरह कराई तो that was negative. तो था वो chicken pox. Now thank you so much. I hope you had a great time. और आपको एक glimpse मिला होगा that how we are going to study in this course. And मेरा मशवरा यही है आप लोगों को कि do join this course, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने इनिशियल वेबिनार में, शायद आप लोग उसमें थे या नहीं थे, कि एग्जाम में फेलियर का कॉज एक ये भी होता है कि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है. एंड वी आर वेरी बिजी इन आवर रूटीन लाइफ एंड इन आवर जॉब्स एंड फैमिली लाइफ, कि एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. ऐसे कोर्स का फायदा ही हो जाता है दैट वी गेट गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु हैव गॉन थ्रू ऑल दीज स्टेजेस, और जिन्होंने एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है, दिया हुआ है. एंड इस तरह फिर पीपल लाइक मी दे कैन गाइड यू वेल. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एक रूटीन बनाना पढ़ने की, खुद से किताब खोल के पढ़ना, खुद से टाइम निकालना, इसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत है. आपको समटाइम्स एक स्ट्रिक्टनेस की जरूरत होती है दैट योर टाइम इज फिक्स्ड. जैसे बचपन में होता था कि योर टाइम इज स्केड्यूल इज फिक्स्ड, कि इतने बजे ये पढ़ना ही है, इतने बजे ये पढ़ने के बाद इसका टेस्ट होना है. तो इस तरह के कोर्स में एक आपके ऊपर खुद एक स्ट्रिक्टनेस हो जाती है. आपको पता है कि क्लास हो रही है, आई हैव पेड फॉर द कोर्स, मुझे ये क्लास लेनी है, मुझे क्लास के बाद ये टेस्ट दिया गया है, सो आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू रिवाइज द स्टफ. तो एक स्ट्रिक्टनेस रहती है और फिर आप पढ़ भी लेते हैं.
So all the best for your exam preparation, and I would like to invite all of you to join my course. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.